ना बेटा, कभी पूछा गया क्वेश्चन 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, राइट? बी फोकस हियर, ऑब्जर्व केयरफुल, लुक एट द कंपाउंड केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कंपाउंड दिया बेटा जो क्या करने का अभी करने का बेटा, ध्यान देना. फिर एक बार समझाने की कोशिश कर रहे. यहाँ पर राइट P2 P1 प्लस RW S1 plus S2, S1 plus S2, right? S1 plus S2. See sir, P2 का मतलब क्या सर? So P2 stands for prime secondary prefix. P1 stands for primary prefix, right? RW stands for parent carbon chain. Parent कार्बन चेन PCC, आप पूरा लिखना बेटा. पेरेंट कार्बन चेन, राइट? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स. दिस इज व्हाट? प्राइमरी सफिक्स. PS हम लिख रहे हैं, आप पूरा लिखना. सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. दिस इज यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑब्जर्व केयरफुल बेटा. सो P1 denotes राइट साइक्लिक. व्हाट? साइक्लिक कंपाउंड को ये बताता बेटा. See my dear, this is not a cyclic compound, so that is the reason here P1 absent. चलो next P2. Sir, side groups is present sir. See, this is one methyl group, this is what? This is ethyl group, right? Side groups are present, right? चलो P2 is present, टिक मारो यहाँ पर, right? RW definitely it will be present, right? S1 means what sir? S1 primary suffix that denotes in between carbon and carbon, single bond present or double bond present or triple bond is present, that it will be indicates. That's all बेटा. कहने का मतलब अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करेगा बेटा, डिनोट करेगा. चलो राइट, दिस इज primary suffix, this is definitely present, right? S2 का मतलब बेटा जी secondary suffix. Sir, this is belongs to what? Functional group. It is belongs to functional group. Sir, here no functional group is present sir, so that is the reason this is also take out, right? Remove that. चलो, so अभी क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे P2, see I will write here, P2 is present, RW is present and S1 is present बेटा. ध्यान देना. Now RW, पेरेंट कार्बन चेन, कैसा पता करते, क्या करते, क्या करने का, P2 करने का, फाइंड आउट करने का, कैसा करते बेटा? ध्यान देना यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी वेट ए मोमेंट, सॉरी फॉरगॉट. चलो सी, ध्यान देना बेटा. यहाँ पर नंबरिंग कैसा देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन, Iupac ने बोला लॉन्गेस्ट चेन को पता करो, लॉन्गेस्ट चेन को पता करो. सर कैसा पता करते सर? सी आई कंसिडर दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, दिस इज सिक्स्थ कार्बन, दिस इज सेवंथ कार्बन, दिस इज एथ कार्बन, राइट? Sir, why not here onwards, sir? Why not here onwards? See, I will change the color, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. 1, 2, 3 बेटा, यहाँ पर भूल गया, यहाँ पर 3. This is 4. This is 5. This is 6. This is 7. This is 8. Sir, left to right numbering. Sir, here right to left, ध्यान देना बेटा. right to left or else left to right. Sir, which one is right sir? Sir, Iupac ने बोला बेटा जी, ध्यान देना इस पे, right? The lowest locant sum rule बेटा जी.
here. So what it means of lowest Locke-Sum rule? Sir, lowest Locke-Sum rule का मतलब बेटा यहाँ पर क्या बेटा, ये functional group है बेटा. Sorry, this is one side group, this is one side group. अगर इधर से आए तो बेटा साइड ग्रुप कहाँ कहाँ पे 3 plus 4 that equal to what? 7. That equal to 7. सर इधर से आए तो बेटा 1 2 3 4 5 plus what? 6. So what sir? How much sir? 11. So Iupac ने बोला बेटा जी साइड ग्रुप का नंबर लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट है ना बेटा, लोवेस्ट. That's all. So that is the reason. Right to left. That is right beta. Right to left. That is right. So my dear, this is a wrong numbering beta. This is wrong numbering. This is Iupac said that. Right. Sir, third पे methyl, fourth पे ethyl. So this is right, my dears. So now I will rub here this one. Right. चलो बेटा. Here, focus. Now focus. Sir, what is the name, sir? First, root word. Parent carbon chain. Parent carbon chain मतलब कितना carbons इसमें, sorry, how many carbons are present over there, right? That's all, right? चलो. Sir, 8 carbons बेटा. 1 2 3 4 5 6 7 8 carbons are present. So that is the reason it is called as, root word is oct. It is called as what, dear? Oct, right? It is called as oct, right? Next, plus oct. Now beta ध्यान देना, in between carbon and carbon what all are? Single bonds. So that is the reason ane. If in between carbon and carbon single bond is present, that is called as ane. If in between carbon and carbon double bond is present, that is called as ene. In between carbon and carbon triple bond is present, that is called as ine. That's all. चलो next see बेटा, here लिखो यहाँ पर. Next prefix oct, root word ane, S1 दो भी फिनिश हो गया बेटा जी. Right. Next बेटा ध्यान देना यहाँ पर. Sir, this is methyl. कहाँ बेटा? 3 methyl. And this is 4 ethyl. See, 3 methyl, 4 ethyl. 3 methyl, 4 ethyl. Sir, methyl, M. It starts from M. Ethyl, it starts from E. Alphabetically, Iupac ने बोला alphabetical order you have to write. That said, who said? Iupac said. Once again I समझा दे बेटा. methyl का M से start होता, ethyl का E से start होता. So E comes first. So क्या लिखने का बेटा? 4 ethyl लिखने का बेटा जी. 4 ethyl plus 3 methyl. 3 methyl. That's it. चलो पूरा कनेक्ट करे तो बेटा क्या होता? ऑप्शन आ जाता. ये ऑप्शन कहाँ दिया बेटा? ये ऑप्शन बेटा जी हाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया बेटा. 4 ethyl 3 methyl octane. 4 ethyl 3 methyl octane. I hope you clear everyone, right? समझाने का कोशिश करते हैं. Recap, small recap, 30 seconds recap. See, first of all, find out the longest chain. Sir, 1 2 3 4 5 6 7 8 longest chain. बात नंबर 1. बात नंबर 2, side groups, right? This is methyl, this is ethyl. Methyl is present at 3rd carbon, ethyl is present at 4th carbon. So finally what, my dears? 4 ethyl 3 methyl octa plus ane का मतलब बेटा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट. That's all.